Hello guys. So let us see the Zener diode characteristics, right? So Zener diode characteristics. What are the Zener diode characteristics? Characteristics मतलब क्या? It is the graph of हमेशा बताया था. What is characteristics? Characteristics is nothing but the graph of voltage versus current, right? अभी voltage कौन सा? So Zener voltage, Zener के across क्या voltage हमने लगाया है और Zener में क्या current flow हो रहा है, right? So this is nothing but the characteristics of Zener diode. तो हमने देखा था कि ये जो है दिस इज द सिंबल फॉर द Zener डायोड. फॉरवर्ड बायस में हमने कैसे काम करेगा? इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल डायोड. रिवर्स बायस में क्या करेगा? रिवर्स बायस में भी करंट जाएगा Zener डायोड में, बट इट विल एक्ट एज अ बट इन रिवर्स बायस द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड विल बी कांस्टेंट एंड दैट विल बी VZ, राइट. और वोल्टेज कैसा रहेगा? तो पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा. ये पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, नेगेटिव यहाँ पर आ गया, इसलिए हमने ऐसा लगाया था इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट, राइट. एनोड पे निगेटिव, एनोड पे निगेटिव, cathode पे positive, right? Okay. So now see here, what will happen in forward bias? In forward bias मतलब it is the graph of forward voltage versus forward current, right? So what will happen in forward bias? The Zener diode will work as a normal diode. Normal diode मतलब क्या? It will not conduct till the breakdown voltage or it will not conduct till the knee voltage, right? जब तक knee voltage मतलब क्या? नी वोल्टेज मतलब क्या? बैरियर पोटेंशियल का वोल्टेज, राइट. बैरियर पोटेंशियल के वोल्टेज होने तक वो कंडक्ट नहीं करेगा. एज सुन एज द वोल्टेज विल रीच अप टू इट्स बैरियर पोटेंशियल, व्हाट विल हैपन? द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग एंड द करंट विल फ्लो इन द normal diode, right? So in forward bias the working of the Zener diode is same as of a normal diode. It will act as a normal diode in forward bias and current increases rapidly after it reaches the threshold voltage, right? So I don't think that there is any problem in forward bias. But reverse bias में क्या होता है? reverse bias में Zener, Zener कैसा है? प्रेशर एब्जॉर्ब करने वाला बंदा है, राइट. सो व्हाट विल हैपन, इन रिवर्स बायस, जब हम रिवर्स बायस में लगाते हैं नॉर्मल डायोड, so in reverse bias the current is due to the minority charge carrier, very small amount of current will flow in the normal diode, right. So normal diode का मैं आपको एक बार just assume that I am teaching you normal diode. तो normal diode में क्या होता है? Some very small amount of current will flow, right, and that current is called as reverse saturation current. It is denoted by I naught. And what will happen after breakdown voltage, that is यहाँ पर VBR था, after breakdown voltage what will happen? Very large amount of current will flow in the normal diode और normal diode जल के खराब हो जाएगा, राइट. बट Zener डायोड में ऐसा होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, राइट. Zener डायोड रिवर्स बायस में जलेगा क्या? बिल्कुल नहीं. अगर हमने उसके अक्रॉस वोल्टेज भी बढ़ाया तो भी Zener डायोड बिल्कुल नहीं जलेगा. Zener डायोड में क्या सीन होता है? सो इन Zener डायोड व्हाट विल हैपन, in Zener diode very small amount of current will flow, right, and that is called as I naught, okay. Or after I naught, once it reaches to its breakdown voltage which is VZ, what will happen? The current will start flowing in the Zener diode. What current will flow? The current will flow from IZ minimum, right. The current will flow from IZ minimum and till IZ maximum, right. The diode will allow to flow the current through it, right, by maintaining constant voltage. मतलब ये जो current flow हो रहा है ना, ये जो करंट IZ मिनिमम से IZ मैक्सिमम तक जो करंट फ्लो हो रहा है ना, तब वोल्टेज कितना रह रहा है आपका? कांस्टेंट. एंड व्हाट इज द वोल्टेज? VZ. So in reverse bias what will happen after breakdown, right, current can flow in the diode, right, but voltage will be constant. This is in case of Zener diode when it is in reverse bias, right. अभी करंट कहां से कहां तक फ्लो होगा? So current will flow from IZ minimum till IZ maximum. Current will flow from IZ minimum till IZ maximum, right. So this range of the current is called as Zener region. This uh, range of current is called as Zener region, or it is called as operating range. Operating range, right. ऑपरेटिंग रेंज Zener डायोड की कहां से कहां तक है? IZ मिनिमम टू IZ मैक्सिमम, राइट. IZ मैक्सिमम के बाहर भी अगर करंट फ्लो होता है तो फिर क्या होगा? अगर करंट बढ़ा तो फिर क्या होगा? Zener डायोड एक खराब हो जाएगा, राइट. सो दिस IZ मैक्सिमम इज नथिंग बट द मैक्सिमम अमाउंट और मैक्सिमम लिमिट of the Zener diode which can allow the current to flow through it. After this IZ maximum, after this point, what will happen? Diode will get damage. Diode may get damage, right. But
हमेशा याद क्या रखना है कि रिवर्स बायस में वोल्टेज कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. एंड एट जीनर वोल्टेज, वीजेड मतलब क्या, जीनर वोल्टेज, करंट इंक्रीजेस शार्पली एंड वोल्टेज रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, राइट. अब इसमें की पैरामीटर्स जो हमेशा ध्यान में रखने वो कौन से है आपके, वीजेड दैट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज उसको जीनर वोल्टेज भी बोलेंगे और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा वीजेड. सेकंड इज आपका आईजेड, आईजेड मतलब क्या है आपका, एक है आपका, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बता रहा हूँ, राइट. Vz is nothing but your breakdown voltage. Iz, what is Iz? Iz is nothing but the current flowing in the breakdown region, right? Or operating range of the Zener diode is between Iz minimum, right? ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए आपका, आपको अगर Zener diode ऑपरेट करना है तो उसमें करंट कहाँ से कहाँ तक रखना चाहिए, Iz मिनिमम टू Iz मैक्सिमम. बिफोर Iz मिनिमम the diode will not work. After Iz maximum the diode will get damaged. So properly constant voltage diode कब देगा आपका, whenever the operating range or whenever the current range is between Iz minimum to Iz maximum, right. And what is RD? RD is nothing but the dynamic resistance. आपके पास यहाँ पे ग्राफ है, right, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है. So if you try to find out the slope of the graph, right, V by R, delta V by delta R, you will get this dynamic resistance of the diode, right. ये एक पैरामीटर है. और लास्ट है आपका P max. P max is what? P max is nothing but Vz into Iz max, right. What is the maximum power? What is the maximum power which can get dissipated across this diode is P max, and P max is nothing but Vz into Iz max, right. So guys, this was your characteristics of the Zener diode, right, and some important parameters, how it will work in forward bias, how it will work in reverse bias. हमेशा सिर्फ एक बात याद रखनी है, in reverse bias, you know, the voltage across the Zener diode will be constant, voltage across the Zener diode will be constant, and current will vary from Iz minimum to Iz maximum. Thank you guys. Let us meet in next video.